So, welcome again to Aki's programming. In this one, we'll be doing a lots and lots of, not a lots and lots of, we are going to discover the basics of Java. So, पिछले वीडियो में हमने theoreticals के बारे में बात की थी. We talked about how Java works theoretically. In this one, we are going to do that practically. We are going to see what is class methods. We are going to see like methods, class methods okay, and then we are going to see like variable declarations किस तरह से होता है. We are going to discover the arithmetic operations. Then we are going to do like conditional statements, which are obviously if else statements. So this is what we are going to do in this tutorial. Loops or वो सब we'll be seeing in other chapters, but for now we are doing this. So let's just not waste our time in talking, and let's just do some coding. So let's just get into the coding. So basically Java का जब भी हम एक प्रोग्राम लिख रहे होते हैं we have to create a class. So basically हम सबसे पहले एक access specifier से class बनाएंगे. So there are three access specifier, we all know that: public, private, protected. So in this one we'll be using public. So सबसे पहले हम public के बारे में ही use करने वाले हैं. Then we'll just see कि यार private, protected ये सब क्या होते हैं. But for now we are going to use public. So public class and then the name of the class. सबसे पहले we use public, which is an access specifier, then the class keyword, then the name of the class. Then we say public static void main, then string args. This is basically somewhat of like a template. So ये basically Java का जब भी तुम लोग कोड लिख रहे हो, have to write this inside this. It is somewhat like very similar to C++. You know, you write C++ code in like void main, and you write get ch in the beginning, you write clrscr. So ये basically उसकी तरह होता है. So I'm just going to write like class block, and this is method block, right? So जो public class है, that is our class block, and inside that there is a method block. So which method we have? Static method, right? We don't have dynamic methods right now. We are going to see यार क्या dynamic methods क्या होती हैं and things like that, but for now we are using static. So to print anything in JavaScript, what do you write? System.out.println. Make sure you write S capital, right? So system.out.print. So basically this is used to print anything. Like तुम लोग को कुछ भी print करना है, what do you write? System.out.print, and inside the parenthesis you write hello world, and make sure to use double quote. You cannot write anything in single quotes, ये error throw कर देगा. And at the end, to terminate anything, you make sure you put a semicolon. Like end में सबका semicolon आएगा 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 ही. डबल कोट्स में हर एक चीज़ लिखनी है. व्हेन यू आर प्रिंटिंग समथिंग, राइट इट इन डबल कोट्स. सिंगल कोट्स में लिखोगे एरर आ जाएगी. ऑलराइट, एंड मेक श्योर टू टर्मिनेट एवरी सिंगल सेंटेंस विथ अ सेमीकोलन. और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखो तो एस कैपिटल होना चाहिए. ऑलराइट, रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑल स्मॉल. So this is very basic. So now we have two ways to print. Like we have multiple ways, but we are going to like see two ways only for now. So system.out.print के अलावा भी we have something, system.out.println. So basically what is the meaning of ln? It basically refers to new line. ये एक नई लाइन में प्रिंट करता है. मान लो बेसिकली if I try to print this, what it will print? hello hello and welcome to this world. Single line, एक ही लाइन में सब कुछ प्रिंट कर दिया. I don't want that. I want it to print in different lines. So what do I do? Say ln. So if I write ln in just one line, will it create a new line? Let's just see. The answer is no. So if we write ln in both the lines, then yes, it will do. But if we write in just one line, it will not work. Let's just see यार, देख लेते हैं. So I'll just simply run this program, and you will see same, मतलब पूरा का पूरा output same ही होगा. There will be no difference. So just wait it out, and you can see same output, no difference. So now if I write ln in both the lines, it will work. So print करके देख लेते हैं. Let's just print this. Okay, Python में सर्वर रन नहीं करना है यार. So I was doing Django, like मैं Django के सर्वर रन कर रहा था. I was creating a project of my own. So CLS, and let's just run this. Okay, it's taking a little time. Okay, you can see hello and welcome to the world. Perfect, as we want it to be, exactly the same.
सो ये बेसिकली प्रिंट एलन का काम है. So now since we have discovered this, now we are going to go towards something interesting. like एक काम करते हैं, print ln को अगर खाली छोड़ दो तो what if you don't give any arguments, what would happen in that case? if you don't give any arguments, it will just leave a blank space, एक खाली जगह छोड़ देगा, एक लाइन बीच में skip कर देगा. it will just say hello and space, then welcome to the world. You can see the space in the middle. So now let's just in Python, you know कि यार Python के मैं कोई भी ट्यूटोरियल्स देखे हूँ, तुम लोग को पता होगा कि ट्रिपल कोट्स जो होते हैं that are used for multi-line comments, but in Java it is different. In Java you put on multi-line comments just like CSS, slash star star slash, middle में जो भी है everything are included in multi-line comments. That is how Java works. So these are the basics. Now we are going to move to if else. एक काम करते हैं, arithmetics पहले ले लेते हैं, then we'll move to Java the if else statements. So everyone knows what are the basic arithmetics, like basic सबसे basic arithmetics क्या होते हैं, plus minus multiply divide. These are the most basic arithmetic operations. So how do we perform that, right? So let's just see how do we perform that. So simply सबसे पहले हम will process everything inside the println, like println के अंदर ही 1 plus 2, then there will be 1 minus 2, 1 into 2 and 1 divided by 2. Simple as that. सबसे पहले we'll just do a very simple thing. Then उसके बाद we'll assign a variable and then use that variable to do that operations. ठीक है, पहले हम सिंपली अंदर के अंदर ही प्रोसेस करेंगे, देन नेक्स्ट जो मूव करेंगे उसमें we'll assign variables, like variables क्रिएट करेंगे and then we will tell those variables to do that things. वेरिएबल्स के थ्रू हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे, पर सबसे पहले we'll just see how does this work. So you can see 3 minus 1 2 0, exactly the same as we want it to be, perfectly fine. So now once we're done with that, now we are going to just create two variables over here. So how do you create variables? So सबसे पहले you need to write the data type of the variable, name of the variable, then assign the value using assignment operator. So data type of the variable, name of the variable, assignment operator and the value of the variable. All right. So a minus b, a plus b, then there will be a into b, then a divide b. Okay, perfect. Now let's just add something over here. So now how we can make it look better? So we can just simply say कि यार हम लोग को नहीं पता कि यार ये एडिशन का आंसर है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन का आंसर कैसे पता चलेगा. So we have to write like this is subtraction, this is multiplication, this is addition, this is division. You have to write. All right. So what do you think? ये एरर थ्रो करेगा क्योंकि यार दो आर्ग्यूमेंट्स हैं हमारे पास इसमें. So पहले मैं सारी एरर्स तुमको दिखा देता हूँ, which kind of errors you can possibly encounter while doing concatenations. सो कॉन्कैटेनेशंस के वक्त ऐसी एरर्स तुम लोग को मिल सकती है, लाइक वो ऊपर सेमीकोलन बच गया था, देन देयर इज एरर्स, लाइक मैं एरर पहले दिखा देता हूँ तुम लोग को कि किस तरह की एरर्स यू कैन एनकाउंटर. सो देयर इज एन एरर, इट सेज लाइक ब्ला ब्ला ब्ला, एक्चुअल एंड फॉर्मूला आर्ग्यूमेंट्स डिफर फ्लोट, क्या बकवास है यार. ओके, सो ये बोल रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, दो आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्टेबल नहीं हैं. सो व्हाट वी कैन वी यूज़ प्लस, लाइक हम बेसिक जैसे कॉन्कैटिनेशन कई सारे लैंग्वेजेस में करते हैं, बेसिक इस तरह से कॉन्कैटिनेशन हमने पाइथन में भी करते हैं यार, PHP में भी कर सकते हैं प्लस से कॉन्कैटिनेशन. कैन वी डू दैट इन जावा? लेट्स जस्ट सी. नो, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, कि यार नहीं चलेगा, प्लस माइनस दो दो चीज़ यार, दो दो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए यहाँ तो. सो वी कैन नॉट यूज़ दैट. सो what we can use over here, so what we can do is create brackets around this. All right, इसको जैसे ही हम ब्रैकेट में डाल देंगे, इट्स डन, वी आर परफेक्टली फाइन, गुड टू गो. नाउ वी कैन जस्ट डन डू दिस and it will work pretty much perfectly as we want it to. All right, so बस साइन चेंज करना है and then we'll change the names like addition, multiplication, subtraction, division, blah blah blah, and we will be done. So let's just change the names. I'll say addition and then this will be multiplication. Okay, multiplication. The last one will be division. This is a division.
Yep. So the division returns the remainder, right? कि यार लास्ट टाइम अगर तुम लोग ने अच्छे से फोकस करके देखा तो द लास्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन वी डिड इन विच आंसर वी हैड जीरो, राइट? जबकि आंसर 1 या 2 होना चाहिए था, बट आंसर 0 था बिकॉज इट रिटर्न्स द रिमाइंडर. सो लेट्स जस्ट सी एंड यू कैन सी परफेक्ट. बट वी वांट अ लिटिल स्पेस यार. एडिशन के बाद डायरेक्टली -11 लिखा है नहीं. आई वांट सम स्पेस. सो आई जस्ट पुट सम स्पेस बिफोर द एंड ऑफ द कोट्स. कोट्स के एंड के पहले थोड़ी स्पेस छोड़ देंगे. नाउ इट विल लुक वेरी परफेक्ट. So let's just wait it out, wait it out, wait it out, and you can see perfectly fine as we want it to be. So that is the declaration of variables. Here is the arithmetic operations of the variables, and here we are done with it. So now we are good to move towards the if else statements, which are the third part of our tutorial. So this will not like go too long. If else statement यार बहुत easy है. जावा में बहुत ज़्यादा easy है यार if else statements. अगर एक बार में समझ जाओ तो एक बार में समझ ही जाओगे यार. बहुत ईजी है. किसी भी रैंडम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह है, और ऊपर से ईजी है. इसमें कई सारे ऊपर से कम चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं यहाँ पे. सो लेट्स जस्ट डू दैट रियल क्विक. सो लेट्स जस्ट क्लियर आउट एवरीथिंग. सब कुछ खाली कर देंगे यहाँ से. पूरी की पूरी स्क्रीन को खाली रखना है. वी वांट जस्ट 2 वेरिएबल्स ए एंड बी. सो बेसिकली हम कहेंगे इफ़ क्या हो अगर ए बी से बड़ा है. अगर ए बड़ा है तो क्या लिखना चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे रिटर्न दे. तो मैं बोलूँगा system.out.println. ठीक है. तो बेसिकली हम इटरेट नहीं बोलते इसको. क्या बोलते हैं वो यार, आई फॉरगॉट द प्रॉपर नेम. इसको एक इंडेंटेशंस. यस, इंडेंट. एक इंडेंट मतलब 4 स्पेसेस होती है. एक टैब स्पेस छोड़ता है. मतलब इफ़ का स्टेटमेंट लिखा, नेक्स्ट लाइन में जो भी मुझे इफ़ के अंदर चाहिए कि अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू हुई तो क्या एग्जीक्यूट होगा, वो मैं इफ़ के नीचे 4 स्पेसेस छोड़ के टैब लगा के फिर लिखूंगा. ऑलराइट. जैसे ही हम टैब से बाहर निकलते हैं, इट विल बी आउटसाइड द इफ स्टेटमेंट, राइट? सो यू कैन सी. ओके. सो नाउ लेट्स जस्ट रन दिस प्रोग्राम. सो अगर b बड़ा है तो इट विल से b इज बिगर, which obviously is the case. So it will say b is okay. What is the issue? I think okay. So अभी यहाँ पे एक इश्यू है. किसको मिल गया? जिसको मिल गया समझदार हो यार, बड़े चालाक हो. सो दीज आर डबल कोट्स. जैसा कि मैंने पहले ही कहा था इस वीडियो के कई शुरुआत में ही कहा था यार मैंने, क्या डबल कोट्स के अंदर ही लिखना है. सिंगल कोट्स में लिखोगे तो एरर आएगी. So let's just run this again, and this time it will run perfectly fine. B is bigger, obviously. Okay, let's just wait a little and b is bigger. Perfect. So now let's just assume कि यार तुम्हारे पास multiple conditions है. You have multiple conditions to check from. So let's just add c over here. I have a variable called c, and now I have to check like multiple conditions. ठीक है. तो आई कैन से कि यार मेरे को चेक करना है कि यार ए बी और सी दोनों से बड़ा है. एंड देन आई जस्ट से यार मल्टीपल कंडीशंस के साथ एक और चीज़ इंटरेस्टिंग रखते हैं कि यार मल्टीपल चीज़ें ट्रू होनी चाहिए. मल्टीपल कंडीशंस ट्रू भी होनी चाहिए. कंडीशंस तो कई सारी है भी, और ऊपर से कई सारी कंडीशंस ट्रू भी हो सकती हैं इसमें से, राइट? तो इसमें रख देता हूँ 20 सी से बड़ा है, जो कि ऑब्वियसली है. दोनों कंडीशंस ट्रू है. फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशंस ट्रू हैं इस केस में. तो क्या प्रिंट होगा? क्या दोनों चीज़ें प्रिंट होंगी? नहीं. इफ़ एल्स स्टेटमेंट का रूल है यार, सिर्फ एक ही चीज़ प्रिंट हो सकती है. सब में से सिर्फ एक ही. 10 लोग लड़ेंगे, जीतेगा सिर्फ एक ही. 2 लोग नहीं जीत सकते. 2 लोग फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ सकते. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. So this is how it works. So what will be the answer? A और B मतलब if और else if दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. C की नहीं हो रही है क्योंकि C यार सबसे छोटा है. So it will probably never get satisfied by condition. So what would be the output? Obviously A is bigger क्योंकि basically if else का what happened? Oh sorry, comma. यार एक बार तो यार बिना एरर के रन कर दे. CLS. ओके. सो ये इफ एल्स स्टेटमेंट का रूल है कि जो भी अगर मल्टीपल कंडीशंस ट्रू हैं, अगर 10 कंडीशंस हमने दे रखी हैं उसमें से 5 ट्रू हैं, तो सबसे पहली ट्रू कौन सी है? सबसे पहली कंडीशन जो ट्रू होती है दैट विल बी योर आउटपुट. ए इज बिगर. आई रेस्ट माई केस. हियर आई विन. सो सबसे पहली कंडीशन जो भी ट्रू हो रही है, सबसे ऊपर वाली कंडीशन जो भी है, दैट विल बी योर आउटपुट. सिंपल एज दैट. ऑलराइट. सो दिस वाज ऑल ऑफ इट फॉर टुडेज लेक्चर. तो आज के लिए बस इतना ही.
कल मिलेंगे एक नए लेक्चर में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए डू द हार्ड वर्क, स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक इट।